Hello my dear students and welcome to this lecture series by AKTU. I am Dr. Supriya Fralatpam, Assistant Professor in BBD ITM. I will be taking unit 5 of KCE 603 Environmental Engineering for you. This is my 6th lecture. In lecture number 5 we have already talked about activated sludge process, and in 6th lecture also I will be continuing with activated sludge process. So, this is a syllabus, I have already shown you this. In activated sludge, we are going to continue with this activated sludge. As I have already told you, activated sludge will come under aerobic suspended culture. We have already talked about activated sludge in the last lecture and how it consists of an aeration tank and a secondary sedimentation tank. So, today I will be talking a little bit on a very important part of activated sludge, which may cause problems to an activated sludge plant, called sludge bulking. So, what is exactly is sludge bulking? It is the sludge which does not settle well in the sedimentation tank is called the bulking sludge. So, in activated sludge process, we have the aeration tank here, followed by the SST, right, where a part of the sludge will be returned, the effluent is here, here will be wastage sludge. So, when the sludge is not settling properly in the sedimentation tank, this problem of sludge bulking occurs. Okay. तो sludge bulking जो हो गया, एक क्या हो गया, एक operational problem है. ये जैसे we want everything to go smoothly, but sometimes क्या होता है, कुछ ना कुछ problem होता है, right? Some problem may be there. So, this is one of the problem which may occur, and it's a very important problem. That's why we are going to discuss this, right? So, sludge bulking जो होता है, ये किस लिए होता है, कैसे होता है? This may be due to the growth of filamentous microorganisms which do not allow for desirable compaction. एक particular microorganism जो problem create कर सकता है, right? Or due to production of non-filamentous highly hydrated biomass, right? तो एक इधर हो सकता है because of growth of certain type of microorganisms, or due to the presence of very hydrated, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है उसमें, उस sludge में, right? Hydrated, highly hydrated, so you have lots of water in the biomass because of this, right? So, अगर आपके पास problem है तो उसको problem को किस लिए हैं and what may be the solutions for it. Okay. So, there are many reasons for sludge bulking. Okay. उसके लिए बहुत सारे reasons हैं. The presence of toxic substance in influent, lowering of temperatures, insufficient aeration, shock loading are some of the major reasons for sludge bulking. जैसे अगर for example आपकी जो influent है, जो उस पर अगर कुछ टॉक्सिक मटेरियल हो गया या टॉक्सिक कोई केमिकल हो गया, उसकी वजह से ये हो सकता है, राइट. देन अगर ठंडा हो गया, से फॉर एग्जांपल ASP है आपका, क्या है ये, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द माइक्रोऑर्गेनिजम्स, एंड माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो वेरी वेल इन comparatively higher temperature. जैसे ठंडी जगह है यूरोपियन कंट्रीज़ में, दिस ASP एंड ऑल दिस थिंग्स मे नॉट वर्क, मतलब उनके लिए उसके लिए कुछ और दे हैव टू डू some temperature has to be maintained. अगर for example अगर आपका waste water पूरा frozen हो गया, then this is not going to work, right? So, it requires a good temperature, and India में that temperature is available almost everywhere in India. So, God has been very kind to us in this regard कि हमारे पास बहुत अच्छे टेम्परेचर है. तो अगर किसी भी वजह से अगर टेम्परेचर कम हो गया, right, or in hill stations this may create a problem because उस समय पे the bacteria won't be able to live, they will start dying off. Okay. And there is insufficient aeration. अगर आपका ASP में aeration ठीक तरह नहीं हो रहा, से फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर पार्ट पे एरेशन नहीं हो रहा हो, या आपका जो डिफ्यूजर्स हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने डिफ्यूजर्स लगा रखे हैं, ये वाला पार्ट अगर ख़राब हो गया, राइट, एरेशन सिर्फ यही एरिया पे हो रहा हो, इस वाले एरिया पे नहीं हो रहा, राइट, तो उस वजह से भी हो सकता है. देन शॉक लोडिंग मतलब कभी कभी ज़्यादा और कभी कम, राइट, तो शॉकिंग हो जाता है उस बैक्टीरिया. इट्स लाइक यू आर गिवन मोर वर्क टू डू, राइट, उस हिसाब से. तो they are the major reason for sludge bulking.
Sludge bulking can be controlled by restoring proper air supply. ऑब्वियसली जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहीं वही सॉल्व करेंगे. तो अगर से फॉर एग्जांपल एरेशन ठीक नहीं हो रहा हो तो उसको एरेशन को ठीक करेंगे. एलिमिनेटिंग शॉक लोडिंग टू द रिएक्टर. लोडिंग जो है एक आराम तरह से इन अ प्रॉपर वे दे by increasing temperature of the wastewater or by small hypochlorite dosing to the return sludge line to avoid growth of filamentous hygroscopic microorganisms. ये चीज़ें होता है. नाउ जैसे हमने आप लोगों से बताया कि एक्टिवेटेड स्लज प्लाज्मा में एरेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट. तो आप एरेशन के बिना एक्टिवेटेड स्लज बनेगा ही नहीं. तो एरेशन आप कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू डू द एरेशन? एरेशन यूनिट्स कैन बी क्लासिफाइड एज डिफ्यूज एयर यूनिट्स, मैकेनिकल एरेशन यूनिट्स और कंबाइंड मैकेनिकल एंड डिफ्यूज एयर यूनिट्स. मतलब एक डिफ्यूज एयर, एक मैकेनिकल, या कभी कभी दोनों को मिला के. सो कंबाइंड मैकेनिकल एंड डिफ्यूज एयर यूनिट्स. तो इन दिस केस आई विल बी डिस्कसिंग डिफ्यूज एयर, मैकेनिकल एरेशन. सो हम बताएंगे कि हम डिफ्यूज में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है. सिंस टाइम डज नॉट परमिट, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू डीप इन दिस, a little bit I'll tell. और दोनों को मिला के we will have mechanical or diffuse system, right? Now let's come to diffuse air aeration. In diffuse air aeration, compressed air is blown through diffusers. The tanks of these units are generally in the form of narrow rectangular channels. Air diffusers are provided at the bottom of the tank, and air before passing through these diffusers must be passed through air filters to remove dirt. The required pressure is maintained by means of air compressors, right. So अगर मैं आपको diffuse air aeration, अगर मैं आपको बोलूँ फिजिकली कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगी, तो मेरा एग्जाम्पल होगा एक्वेरियम. एक्वेरियम में क्या होता है? आपने अगर एक्वेरियम देखा होगा तो एक्वेरियम में आपका यहाँ पे आप पंप लगाते हैं और यहाँ से एयर बबल्स या ऑक्सीजन बबल्स होता है, एंड वो आपके एक्वेरियम की पानी को एरेट करता है. So in a similar way, that is what is exactly happening, right. So these are the compressed air which are coming, and ये आपका वैसे ही आपको ऑक्सीजन दे रहा है. So this is the diffuse air aeration, right. So in diffuse air aeration, compressed air, here also you are giving compressed air. Compressed air is blown through diffusers. The tank of these units are generally in the form of narrow rectangular channels. Air diffusers are provided at the bottom of the tank, and air before passing through diffusers must be passed through air filters to remove dirt, and required pressure is maintained by means of air compressions. Generally two types, one is called ridge and furrow type, another is called spiral flow type. Okay. Now let us come to the next aeration unit, that is a mechanical aeration unit. In a mechanical aeration unit, the main objective of the mechanical aeration is to bring every time new surface of wastewater in contact with air. So, right. So what is happening is you are not you are actually sort of moving the wastewater so that the wastewater comes in contact with the air. मतलब आप उसको physically move कर रहे हो wastewater को, right. So in diffuse air aeration, only 5 to 12% of the total quantity of air compressed is utilized for oxidation, and the rest of the air is provided for mixing. For this surface aerators, either fixed or floating type can be used. Rectangular aeration tanks are divided into square tanks, and each square section is provided with one mixer. तो क्या होता है, आपको एक तरह से मैकेनिकल में आप पानी को मूव कर रहे हो, यू आर मूविंग द पानी, वाटर. ओके. सो डिफ्यूज में क्या था, आप पानी को मूव नहीं कर रहे हो, यू आर सिंपली प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, यू आर सिंपली प्रोवाइडिंग एयर टू द वेस्ट वाटर. हियर यू आर फिजिकली मूविंग द waste water so that it gets oxygen from the air atmosphere. Okay. The impellers are so adjusted that when the electric motor starts, they suck the sewage from the center with or without tube support and throw it in the form of thin sprays over the surface of the wastewater. When the wastewater is sprayed in the air, more surface area of wastewater is brought in contact with the
air and hence aeration will occur at accelerated rate. Detention period of aeration tank treating sewage is usually 5 to 8 hours. Volume of aeration tank should be worked out considering the return sludge volume, right. So, it is a motor is moving and physically moving the wastewater. Okay. So, that is how what is happening. Now, so these are the what we have talked about is कि किस तरह से आप एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में एरेशन करते हैं, बट जो अभी तक हम लोगों ने बात किया वो सब था कन्वेंशनल एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, मतलब कन्वेंशनल जैसे पहले होता था. अब ऐसे ऐसे जैसे जैसे टाइम जाते हैं व्हाट पीपल हैव डूइंग इज पीपल हैव स्टार्टेड मॉडिफिकेशन ऑफ द एएसपी डिफरेंट. व्हाई देयर आर मेनी थिंग्स. कभी कभी क्या होता है आपको लगता है कि आपकी इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन ज़्यादा है या आपको ज़्यादा बेटर एफ्लुएंस चाहिए या आपको कम एफ्लुएंस से भी काम चल जाएगा इफ़ यू आर सेविंग मनी. सो देयर आर मेनी थिंग्स. तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग अपनी जो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करते रहते हैं. वी ट्राई टू मॉडिफाई इट, राइट. सो देयर आर मेनी मॉडिफिकेशंस. द मेजर आर tapered aeration process, stepped aeration process, contact stabilization process or bioabsorption process, complete mix process, modified aeration process, extended aeration process and activated aeration process, right. So, we will talk about it one by one. So, in tapered aeration process, let us talk about this first. What is tapered aeration process? In tapered aeration process, compressed air is supplied at a higher rate near the inlet of the tank and is gradually decreased as the sewage moves toward the outlet of the tank, right. तो tapered में क्या होता है, आपको ये पास है आपका aeration tank, okay. This is the aeration tank. Conventional में क्या होगा, आप जो है जैसे फॉर एग्जांपल इसे आप ये आपका इन्फ्लुएंट है, ओके, राइट. तो ये कंप्रेस एयर जो है एक जगह पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एयर डालना शुरू किया. सो व्हाट द इन्फ्लुएंट इज गेटिंग मिक्स विद द एयर, राइट. एंड सभी जगह पे तो सब जगह पे क्या हुआ, इन्फ्लुएंट आपको एयर आपने मिक्स कर लिया एंड यू आर गेटिंग द दिस थिंग हियर. व्हाट इज हैपनिंग, जो इन्फ्लुएंट है यहाँ पे तो उनका जो एयर कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा, राइट. बट एज यू गो डाउन द एरेशन टैंक आपकी ये दिस वुड पार्ट ऑफ दिस वुड हैव गॉट ऑक्सीडाइज, राइट. तो यहाँ आते आते काफ़ी सारा ऑक्सीडाइज हो गया होगा, तो आपको ऑक्सीजन उतना यहाँ नहीं चाहिए या आप ना वेस्ट कर रहे हो, राइट. सो व्हाट इज हैपनिंग इज दैट यहाँ क्या करते हैं आप जो है compressed air is supplied at higher rates near the inlet. So, instead of supplying air at the same rate, you are supplying air like this. Right? मतलब यहाँ पे आपने ऑक्सीजन, जिससे पहले क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में यू आर सप्लाइंग पहले स्टार्टिंग में क्या होता था कन्वेंशनल में यू आर सप्लाइंग एयर एट अ यूनिफॉर्म रेट एवरीवेयर. बट टैपर्ड में क्या होगा, स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा चाहिए होगा तो स्टार्टिंग में यू विल सप्लाई मोर एयर एंड एट द एंड यू विल सप्लाई लेस. वाई, सो दैट आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा. सो यू आर एक्चुअली व्हाट आर यू डूइंग, यू आर आप वेस्टेज को कम कर रहे हो, राइट. यू आर नॉट वेस्टिंग ऑक्सीजन, यू आर एक्चुअली नॉट वेस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, right, because aeration is directly proportional to your electricity consumption, right. तो tapered में compressed air is supplied at a higher rate near the inlet, ज़्यादा inlet में ज़्यादा, and is gradually decreased as the sewage moves from to the outlet. तो यहाँ पे आपने कम कर दिया, right, क्योंकि यहाँ पे तो aeration हो रहा है यहाँ पे ज़्यादा, तो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यह इसलिए, right. Another thing is step aeration process. Sewage is introduced along the length of the aeration tank in several steps while return sludge is introduced at the head. So, tapered में everything is done
इन अ टैपर्ड वे द एरेशन. ओके, एरेशन आपका टैपर्ड वे में. स्टेप एरेशन में क्या है, आपका ये जो आपने इन्फ्लुएंस दिया है यहाँ पे, इट इज़ नॉट डन एट वन पार्ट, इट इज़ इंट्रोड्यूस एट सेवरल. से फॉर एग्जाम्पल स्टेप, सो ये है आपका टैपर्ड, ये आपका स्टेप. सो ये आपका एरेशन प्रोसेस है. इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग, सो इसमें क्या है, आपका एरेशन इज डन, ये आपका एयर है, एयर सेम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आपका जो इन्फ्लुएंट है is provided at different parts of the tank. Say for example, यहाँ आपने 25%, 25% इन्फ्लुएंट, फिर 25, फिर 25 और 25 डाल दिया, सो दैट एयर कंजम्पशन विल बी लेस. अगर भले ही आपको एयर आपने सिमिलर डाल दिया हो, बट इन्फ्लुएंट आपने कम अमाउंट इन्फ्लुएंट थोड़ा थोड़ा बांट के डाल दिया, सो व्हाट विल हैपन, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, राइट. So step sewage is introduced along the length of the aeration tank in several steps while the return sludge is introduced at the head. Okay. The third is called contact stabilization process or bioabsorption process. Sewage and the return sludge are mixed and aerated for a completely shorter period of 0.5 to 1.5 hours in a special mixing tank called contact tank. राइट. सो पहले कॉन्टैक्ट टैंक पे हम लोग सब मिक्स कर लेते हैं. दिस मिक्सिंग विल अलाउ द सस्पेंडेड एंड डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर टू बी शॉर्प टू द एक्टिवेटेड स्लज फ्लॉक. द सटल शॉर्प ऑर्गेनिक एंड द फ्लॉक्स are then transferred to a sludge aeration tank where the organics are stabilized over a period of 3 to 6 hours, which is fed back to the contact aeration tank. The stabilized sludge is then mixed with influent wastewater again and the process is repeated. So in this what will happen, you have a contact reactor, उसके बाद उसमें आपका you will have this type of aeration and then you have the secondary sludge and then a secondary sedimentation tank and then there is a stabilization reactor. So आप इसमें एक reactor add करते हो, right. Now let's come to complete mix process. तो complete mix process में क्या है, in completely mixed process what we are going to do is we are not going to do plug flow regime. Okay, plug flow regime is replaced by completely mixed flow regime by thorough mixing. मतलब plug flow में completely mix हो नहीं पाता है. So generally plug flow reactors will be of like a pipe, it will be longer like a rectangle, okay, long rectangle, whereas in a completely mixed flow you are mixing everything completely in a very uniform way, right. So plug flow regime is replaced by completely mixed flow regime through thorough mixing of the sewage and the return sludge. Sewage and the return sludge are distributed uniformly along one side of the aeration tank and aerated sewage is drawn uniformly along the opposite side, right. Then we have modified aeration process. So एक aeration process है, उसको हम लोग modify कर रहे हैं. So why is it used? It is used when an intermediate quality of effluent containing higher BOD is permissible. मतलब जैसे अगर आपको बहुत अच्छा एफ्लुएंट नहीं होगा तो भी चलेगा, जैसे अगर आपको फार्मिंग करनी है, ठीक है, जो आपको मतलब यू आर सिंपली गोइंग टू डू सम फार्मिंग विद दैट वाटर इफ़ यू वांट टू यूज़ दैट, देन व्हाट इन दिस केस हम लोग मॉडिफाइड एरेशन प्रोसेस कर सकते हैं, जिसमें हमारा बहुत सारा पैसा सेव हो जाएगा, हमारा कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगा. इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें तो हाई BOD अगर कंपैरेटिवली होगा तो भी चलेगा, राइट. तो इसलिए are used when intermediate quality of effluent containing higher BOD is permissible. This process does not need any primary sedimentation tank, ensures short aeration period, high volumetric loading, high F/m ratio, low percentage of sludge return and low concentration of MLSs. Another is extended aeration process. Extended aeration में क्या है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा. Here we are going to go for extended aeration. Aeration आपको ज़्यादा देर के लिए देना है, मतलब you are going to aerate the waste water for a longer period of time. So aeration period extends up to 12 to 24 hours. Oxygen requirement is quite high, thus increasing the running cost of the plant.
तो अगर आप ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और ज़्यादा देर पंप चलाएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो ऑब्वियसली ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा आपका हो जाएगा। द लास्ट वन इज कॉल्ड एक्टिवेटेड एरेशन प्रोसेस। A pair of conventional activated sludge plants operating in parallel are used. Excess activated sludge from the secondary settling tank of one unit is usually will supply to the aeration tank of both the units. So, activated aeration process मतलब आपको कुछ नहीं करना है, कन्वेंशनल आपकी जो activated sludge process है वैसे ही एक दो लगा देंगे साथ में, then that will you will have an activated aeration process. So, they are conventional activated sludge plants operating in parallel, right. Now, this is the modification of activated sludge process. Now, let us come to the important advantages and disadvantages of ASP. This is actually very important. So, this will give you a comparative feel about if when can we use ASP, because every plant is going to cost money. So, your work as an engineer is going to be balancing things between the product you want and how much money you are spending on that product. So, it has to be balanced. So, that is why it is very important to know what advantages and disadvantages, कहाँ पे काम करेगा कहाँ पे काम नहीं करेगा, that will be dependent on you, and right. So, ASP offers secondary treatment with minimum area requirement with high quality effluent. ASP जो है अच्छा effluent देता है और आपको एरिया रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं चाहिए. सो व्हाट, तो अगर एरिया नहीं चाहिए इसका मतलब है दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर बिग सिटीज़, राइट. बिग सिटीज़ में एरिया आपको अगर आप खरीदने जाएंगे, लैंड रिक्वायरमेंट इज गोइंग टू बी अ बिग important factor, right. So अगर आप लैंड रिक्वायरमेंट अगर थोड़ा सा लैंड में काम चल जाएगा then it is going to be a very plus point. So this is going to work in big cities, but capital cost for ASP is lesser but operating cost is more than a trickling filter. So trickling filter में ज़्यादा एरिया चाहिए हो सकता है but operating cost कम है, right. But activated sludge में you will require more operating cost. Why? Because आपको electricity चाहिए होगा to run out aeration tanks, राइट. सो कैपिटल कॉस्ट आपको एक बार बनाने के लिए टाइम लगेगा, पैसा लग सकता है. वाई? बिकॉज यू गोइंग टू कंस्ट्रक्ट एन एरेशन टैंक प्लस द सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, राइट. बट ऑपरेटिंग कॉस्ट हाँ वो भी चाहिए होगा, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आपका हाँ ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका ट्रिकलिंग फिल्टर से कहीं ज़्यादा होगा. ट्रिकलिंग फिल्टर में देयर इज नॉट मच इलेक्ट्रिसिटी यूज, whereas in ASP we are going to use lots of electricity. Loss of head is less and no fly or odor nuisance. जैसे आपका activated sludge में just it's aeration process, so it's not going to smell bad. Trickling filter में बहुत सारी fly की problem हो सकता है because it's open and everything, right. If there is sudden increase in the volume of sewage or if there is sudden change in the character of sewage, adverse effects are observed on an ASP. तो ASP के साथ क्या है, because it's running on a microorganisms, what will happen is that you require everything to be go very uniformly. अगर कुछ problem हो गया, अगर आपका जैसे कोई toxic material आ गया, then ASP के लिए that plant may stop working. Quantity of sludge obtained is larger and hence needs suitable thickening and disposal. ASP is not recommended for first stage treatment of highly concentrated organic wastewater. Okay, not recommended for first stage treatment of highly concentrated organic wastewater. तो ये सब देख के what we have talked is for towns and small cities with medium size plants. अगर छोटा टाउन हो या आपका छोटा सा सिटी हो, उनके लिए ट्रिकलिंग फिल्टर सबसे बेस्ट काम करता है, राइट. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिग सिटीज़ विद लार्ज साइज प्लांट, why large size? Because big cities will have lots of population ज़्यादा होगा, right. Here we will require an activated sludge plant. Okay, so now let's I finished here advantages and disadvantages of ASP. Now let's do a problem of ASP very fast. The average operating data for conventional activated sludge plant treatment is as follows. Wastewater flow is 35,000 meter cube per day. Volume of aeration tank is 10,900 meter cube. Influent BOD is 250 milligram per liter. Effluent BOD is 20 milligram per liter. Mixed liquor suspended solids is 2,500.
effluent suspended solid is 30 milligram per liter, waste sludge suspended solid is 9700 milligram per liter, quantity of waste sludge is 220 meter cube per day. Based on the information, what we have to find out: aeration period, food to microorganisms ratio, percentage efficiency of BOD removal and sludges. This all I have already given in the slides, all this. The formulas are given. What you have to do is you simply have to put those values. So, the given data here is Q equal to 35,000 meter cube per day, Y naught, that is the BOD here, influent BOD 250 milligrams per liter, XT is MLSS, right, remember. So, milligram 2500 MLSS, XR is the return sludge, right, here waste sludge suspended solids 9700 milligram per liter, volume is V equal to 10,900 here, XE, that is when you when Y comes it is BOD. So, 20 milligrams. So, effluent BOD is 20 milligram per liter, XE effluent such suspended solids 30 milligram, and QW, that is the waste sludge, a quantity of waste sludge, that is 220 milligram meter cube per day. So, as already aeration period is given in hours as T equal to V by Q into 24. This V is in meter, V is in 10,900 meter cube, and this is 35,000 meter cube per day. So, you convert per day into in hours, right. So, you get around 7.5 hours, right. F by M ratio, as I already told you, F by M ratio is mass of BOD applied, F is the mass of BOD and M is the what is M is the microorganisms, right. So, when you talked about microorganisms, we are talking about here MLSS. What we are saying that the suspended solids are the microorganisms, right. So, we are taking that. So, F is mass of BOD applied to the aeration system, that is Q into Y naught. You calculate it here, you get this kg per day, and M is the mass of MLSS. So, here M will be equal to Vxt. So, 10,900 into 2,500 divided by 1,000, right. Why 1,000? Because you are converting to kg, right. So, you get this much kg, F by M ratio is this by this, you get 0.32 kg of BOD per day per kg of MLSS. Then percentage of efficiency of BOD removal. How much is the BOD removal? This is very easy. What was the incoming BOD? 250. What was the outgoing BOD? 220, and divide by the incoming BOD into 100, that is 92%, right. And sludges. Sludges is what sludges? Sludges is what we have already seen, that the formula there, theta C equal to Vxt QW. So, in my previous this thing, I have already given this part. Why? Because I have like you can ignore this part because it is a very small amount, but here I have used the full formula here. So, QC equal to Vxt into QW XR plus Q minus QW XE. So, here this is the value here. Where is this value? Sorry. Ek second. Yeah, this is the value, right. Here is Vxt, you get it here. QW is here, you get it 220 here into XR divide by 1000, you will get this in kg per day. Similarly, you get here and you get the sludge as 8.58 days. Okay. So, I think you should try to do this problem all by yourself, right. It is just a substitution of the values, you just have to remember these formulas and you have to substitute the values here. Thank you everyone. Okay. In the next 2 lectures we will try to complete unit 5. Thank you all.